registered from your reference, right? This is very, very important part. So here, reference section, like I mentioned, right on the top, there is PMKK written, or you can also select NSDC training in the reference ID, reference source, they have to provide the TPID. Very, very important. Please remember, when a candidate is registering in the reference, they have to provide the TPID. The candidate will also be required to enter or upload their bio data. Their resume or their CV is also what the candidate needs to upload when they are registering, right? So when they register and click on submit, they get their profile created on NSDC JobX, which means that candidate can simply just go on the landing page. Landing page पे जाने के बाद में candidate login करने के बाद में they can apply on any job that they feel is important to them, the field that which is relevant to them, the job which is matching their qualification. So for any candidate, the platform, जैसा कि सौरभ जी ने बताया, the platform hosts both domestic and international opportunities. यानी as a candidate, यदि मैं एक candidate जयपुर में हूं, यदि मैं केरला में हूं, I have access to not only domestic jobs but also the international opportunity. मैं अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ना सिर्फ देश के अंदर की जॉब बल्कि देश के बाहर में जो कि बहुत सारी जॉब एनएसडीसी एग्रीगेट करते हैं उन जॉब्स को भी मैं देख सकता हूं, उन पे अप्लाई कर सकता हूं. तो आप जान रहे हैं कि मिलकर इस इनिशिएटिव के जरिए हम कितने सारे कैंडिडेट को एक मीनिंगफुल करियर के साथ जोड़ सकते हैं, राइट? सो बाय कमिंग टुगेदर will be able to meaningfully contribute and help a lot of people and make their first step. बहुत सारे लोगों के लिए पहला step होगा in their career, so it's going to be very, very important step, right? So as a candidate, when I apply for any job, let me also show you that very quickly. मैं सिंपली किसी भी जॉब पे जाके व्यू कर सकता हूँ. व्यू करने के बाद में मैं उस जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ कि इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अगर करती है, फॉर एग्जाम्पल आई सी कि ये जॉब का नाम है, मान लीजिए सीनियर केमिस्ट, और इस जॉब का सैलरी ब्रैकेट है बिटवीन 2 लाख टू 3 lakhs per annum, but the job requires 1 year of experience. Also, this job is located in Bharuch, right? When I see this and I read the job description, I feel कि ये जॉब मेरे लिए important है भी या नहीं. हेलो अगर ये सर. मेरे लिए important, हेलो. then I will simply click on apply and my app प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कैंडिडेट चाहे जितनी मर्जी उतनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं. सर स्क्रीन नहीं नॉट दिख रहा ओनली है. नॉट ओनली दैट कि वो कितनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार. सॉरी, आई एम जस्ट कटिंग इन बिटवीन कि अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, वी विल शेयर द प्रेजेंटेशन इसकी. हेलो. बट अभी के लिए आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. हेलो विक्रांत सक्षम. Yes, we are all here, and please try to understand that we have over 1,000 people joined with us. You might be having some problem at your local connectivity. That's why you are not able to see the screen. We request you not to interrupt in between. We will share a presentation elaborating the registration process and everything post this session. So please be patient and bear with us. And keep yourself on mute. Thank you, everyone. Right. Thank you so much. Thank you for your patience also. I think a lot of people have joined and a lot of them are on mute. So thank you for maintaining your patience there. So like I was saying कि बहुत ही शानदार तरीके से कैंडिडेट चाहे जितनी उतनी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं. Now coming to the very important part, जो कि आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन करते समय जब कैंडिडेट ने अप्लाई किया उन्होंने रेफरेंस में टीपीआईडी डाला है. इस चीज का आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ट्रेनिंग पार्टनर्स टेक अ नोट ऑफ इट कि कैंडिडेट को रजिस्टर करते समय टीपीआईडी डालना इज. Now, like I said, let's say I want to apply for this job. I will simply click on apply. If I am a registered candidate, I can put my mobile number. I can just use click on OTP by login, right? I will get an OTP on my mobile number. That is what I'm going to enter right now and show you what happens when a candidate is registered on platform.
सिर्फ ओटीपी डाल के, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड यूजर हूं, आप देखेंगे इट सेज आई हैव अप्लाइड ऑन दिस जॉब, दिस, ठीक है, जैसे ही मैंने ओके पे दबाया, दिस इज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दिस जॉब. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर is that as a candidate, I can see from my profile itself that how many jobs I have applied into. Okay, that is what I'm going to get. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लिखा आ गया कि you have successfully applied for this job. I can simply click on applied job. I can see all the jobs that I have applied in. और ये भी देख सकता हूँ यदि अगर किसी एम्प्लॉयर ने मुझे रिजेक्ट किया है या किसी एम्प्लॉयर ने मुझे सिलेक्ट किया है, आई कैन गेट दैट स्टेटस नॉट ओनली फ्रॉम प्लेटफॉर्म, कि प्लेटफॉर्म के जरिए से नहीं, बल्कि मेरे मैसेज पे, मेरे मोबाइल पे, मेरे ईमेल पर मुझे मैसेज भी आएगा जब मुझे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट करेगा या सिलेक्ट करेगा. So for a candidate, this platform not only helps them in the application process, but also to help them in the application tracking process, right? So बहुत important part, that first of all, every candidate needs to register. And second important is that while registering, the candidate needs to provide the TP ID. And third, the candidate can simply come and track their application status, right? Now I'm going to go back to the presentation that we had, and I'm going to talk about the very important part, which is that now what are we going to do together. जैसा कि आपने देखा कि हम जॉबएक्स पे जाके कैंडिडेट को रजिस्टर करा सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर कि हम आपके साथ मिलके कैंडिडेट को और किस किस तरीके से बेनिफिट करना चाहते हैं, राइट? Along with you, how do we want to encourage candidate, help candidate find a meaningful career opportunity, career path, right? So as you can see on screen कि जॉबएक्स पे सिर्फ आज की तारीख में अगर कैंडिडेट अप्लाई कर पा रहा है, in the next version of JobX, which is coming very soon, you can see that candidate will have access to mobile app. The candidate will have access to resume builder. यानी अगर मेरे पास मेरा CV नहीं है या मुझे CV बनाना नहीं आता या कोई मुझे गाइड नहीं कर सकता, the platform is going to help the candidate build their CV. प्रोफाइल रिकमेंडेशन टू रिक्रूटर. अगर आज की तारीख में मुझे जॉब अप्लाई करना नहीं आता, लेकिन मेरी प्रोफाइल के बेसिस पे क्या मुझे ऐसे एम्प्लॉयर्स को रेकमेंड किया जाएगा जो मेरी प्रोफाइल जैसे कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर विच इज गोइंग टू कम वेरी वेरी सून. If I talk about courses and training center recommendation, this is very important for training partners. अगर आज की तारीख में मैं एक कैंडिडेट हूं and I want to apply for a job, but let's say for some reason I am continuously getting rejected, मैं बार बार रिजेक्ट हो रहा हूं, but the employer or the system will say कि okay Vikrant, doesn't matter even if you are getting rejected, here are 10 courses being provided by these 10 training centers, training partners. आप वहां जाके इन ट्रेनिंग कोर्सेज को कर लो जिससे ये जॉब आपके लिए और आसान हो जाएगी, right? So that is one of the critical feature which is going to come very very soon for training partners, right? If I talk about profile prioritization, अगर 1000 कैंडिडेट किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, हाउ डू वी पुट द बेस्ट कैंडिडेट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर विल बी कमिंग अप विद वेरी वेरी सून. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट एम्प्लॉयर्स स्पेशली आस्क फॉर. एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि अच्छा बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट हाउ डू वी नो विच कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है या इंफॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की है इज एक्चुअली करेक्ट? हाउ डू वी वेरीफाई दैट? आज की तारीख में वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू वेरीफाई the let's say education profile, the background or the experience of the candidate. तो उसके लिए भी NSDC बहुत ही जल्द जॉबएक्स पे ही वो वेरिफिकेशन सुविधा लेकर आएगी जिससे कैंडिडेट यहाँ पे आके अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई भी करा सकते हैं, मेकिंग देम द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द एम्प्लॉयर्स. तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं which are going to come very very soon, and for that reason today we are convening, today we are meeting, and we are coming out with a grand program that I'm going to talk about in the coming slides कि अब हम मिलकर क्या बड़ा करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अब आने वाली स्लाइड्स पे बताना चाहता हूं. जब काफी चिंतन हुआ, स्पेशली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ में, बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, तो ये डिसाइड किया गया क्यों ना हम लोग एक सेलिब्रेशन करें, हम क्यों ना मिलके एक उत्साह करें, क्यों ना मिलके हम लोग बात करें एक ऐसे संगम की जिसमें हम अपने जितने कैंडिडेट्स हैं, हमारे उन कैंडिडेट्स को जिनको हमने ट्रेन किया, उन कैंडिडेट्स को जिनकी स्किल डेवलप करी, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट को कैसे हम एक कैंपेन के जरिए एक मुहिम से जोड़ सकें. सो दिस इज व्हाट वाज थॉट
कि एक कौशल संगम की कल्पना की गई है। कौशल संगम क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और इस प्रोग्राम से स्पेशली आज हम सारे के सारे कैसे जुड़े हैं और कैसे आने वाले समय में हम कंट्रीब्यूट करने वाले, मैं उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, कौशल संगम इज बेसिकली अ स्कीम और एन इनिशिएटिव वेयर we are going to be connecting the skilled and certified candidate with domestic and international career opportunities। यानी इस इनिशिएटिव में ऐसे कैंडिडेट जिनको आपने तराशा है, ऐसे कैंडिडेट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में पे कनेक्ट करने की एक मुहिम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, स्पेशली जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, स्किल्ड कैंडिडेट